complexity as well. Correct? Go step by step. Things will be manageable. Going back, ये कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, एंड नाउ इट्स टाइम वी विल कंटिन्यू विद द मर्ज सॉर्ट फर्स्ट. तो पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट देखते हैं, बाद में अगर टाइम बचा देन वी विल गो ऑन अ क्विक सॉर्ट. चलो, व्हाट इज मर्ज सॉर्ट? व्हाट इज मर्ज सॉर्ट? थोड़ा मोर और लेस इट इज सिमिलर टू द बाइनरी सर्च. मैं आपको मर्ज सॉर्ट का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जो हम लोग यूजुअली करते हैं. अभी तो कैसे सब कुछ ऑनलाइन मोड में चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑनलाइन मोड. द स्टोरी इज लाइक हमें करने लायक कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग आपके एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं. वो डायरेक्टली वो हैकर अर्थ वहां पर वो सीधा सीधा हमको रिपोर्ट लाके देता है, इस बंदे के इतने एग्जाम्स हुए, इसके इतने इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसके इतने करेक्ट हैं, इसके इतने मार्क्स है. हमको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, तो हमें करने लायक ज्यादा कुछ होता नहीं है. लेकिन जब ऑफलाइन जब कोर्स होता था, तो हम लोग एग्जाम लेते थे, और एग्जाम लेते थे तो बच्चे रैंडमली ऐसे हवा हम लोग स्प्रेड करवाते थे उनको, एक बेंच के ऊपर एक बच्चा, और हर एक को एक एक आंसर बुकलेट दिया जाता था. आंसर बुकलेट ही सपोज टू कंप्लीट द, जो कुछ भी होगा, एमसीक्यू एग्जाम होगा या फिर जो भी लैब एग्जाम होगा, ही यूज्ड टू कंप्लीट दैट. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ही नीड टू मेंशन इट ऑन आंसर बुकलेट. एट द एंड, वी कलेक्ट ऑल द आंसर पेपर्स. अब ऑब्वियसली सिंस बच्चे सारे रैंडमली बैठे हुए हैं, तो जो सारे आंसर पेपर हमारे कलेक्ट होते थे वो सारे रैंडमली होते थे. लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब उनको स्टोर करना है तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करना पड़ता था. तो सर, आप कैसे सॉर्ट करते हो? कॉमन सेंस है, 200 बच्चों के अगर मैं एक बंदा अगर सॉर्ट करने बैठेगा तो आई गेस हालत खराब हो जाएगा. सो 200 स्टूडेंट्स यू आर सॉर्टिंग लाइक 1 2 3 4. दिस इज इम्पॉसिबल. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्टाफ रूम में, चलो 5-6 लोग बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, सो वी जस्ट डिवाइड इट कि 200 पेपर मेरे पास है, ये थोड़े तू ले, थोड़े तू ले, थोड़े तू ले, थोड़े तू ले. एंड व्हाट यू डू, यू सॉर्ट इट एट योर ओन लेवल. यू सॉर्ट इट एट योर ओन लेवल. अब जितने 6-7 स्टाफ है, हर एक को एक एक पार्टीशन दिया जाता था, एक एक पार्ट दिया जाता था, और वो अपना अपना सॉर्ट करता था. अब सॉर्टिंग हो गया. नाउ लेट अस बिगिन मर्जिंग. सो वी स्टार्ट विथ 1 नंबर किसके पास है, सो जिस किसी स्टाफ के पास 1 नंबर है वो 1 नंबर देता है. 2 नंबर किसके पास है, ए 2 नंबर. 3 नंबर किसके पास है, वो 3 नंबर. 4 नंबर किसके पास है, 4 नंबर. 5 नंबर किसके पास है, तेरे पास ही है, ओके 5 नंबर. 6 number, 7 number, 8 number, and this way we are just taking it all, and then we are having all 200 papers in a sorted order. What is the logic over here? The logic over is that the whole array of 200 is divided into 6-7 partitions. The 6-7 partitions are sorted individually, and once they are sorted individually, they are again clubbed together. But while clubbing them together, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक के पास जो स्मॉलर है वो एक एक ले रहे हैं. सो जिस पार्टीशन में जो स्मॉलर है, दैट वी आर कलेक्टिंग इट एंड देन वी गेट इट एवरीथिंग सॉर्टेड. सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 सॉर्टेड पार्टीशंस को मर्ज करके एक पार्टीशन में ले रहे हैं. दिस इज नथिंग बट लॉजिक बिहाइंड मर्ज सॉर्ट. अरे यू गॉट द पॉइंट? लॉजिक समझ में आया क्या? हम लोग इसका पेपर वर्क भी करने वाले हैं और हम इसका कोड भी लिखने वाले हैं, तो आप चिंता मत करना. एज फार एज पेपर वर्क एंड कोड इज कंसर्न, आई विल एक्सप्लेन यू. आई एम जस्ट फर्स्ट टेलिंग यू द फिलोसॉफी बिहाइंड इट. मैं फिर से पूछ रहा हूं, इज द लॉजिक इज क्लियर? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? द आइडिया बिहाइंड इज दैट जो भी आपके पास एरे है, यू डिवाइड द एरे इनटू मल्टीपल पार्टीशंस. स्टेप नंबर 1, you sort each partition individually. And then अब ये जो partitions है, they are sorted partitions. Then you merge those partitions. That is the idea behind merge sort. तो let us do it on paper. अब यहां पर हम लोग मल्टीपल में नहीं करने वाले, हम लोग यहां पर लॉजिक सिंपल कहते हैं. मर्ज सॉर्ट में यू डिवाइड एरे इनटू 2 इक्वल पार्टीशंस और 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्टीशन, जैसे हमने बाइनरी सर्च में किया था. डिवाइड द एरे इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्टीशंस. सॉर्ट बोथ द पार्टीशंस individually, and then take the smallest one at a place. ऐसे एक एक स्मॉलर कलेक्ट करो and then you sort everything. सर नहीं समझा? 2 मिनट, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल.
पे अटेंशन। मैं पहला पास बता रहा हूं, पहला पास ठीक से समझो। वापिस ये रिकर्सिव कोड है। रिकर्सिव कोड में इफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पास, राइटिंग कोड बिकम वेरी इजी। तो पहले पहले पास के ऊपर ध्यान दो। रिकर्सिव सर उसके अंदर वाला कैसे होगा, उसकी चिंता अभी मत करो, पहले फर्स्ट पास, द टॉप मोस्ट पास। So you take a look at this. So first of all, I want to divide the array into two parts. In this part, I'm saying left. If this is right. How do you find middle? Can someone recall? A middle कैसे ढूंढेंगे? How to find middle? और middle is equal to बाइनरी सर्च हमने किया ना, exactly. Middle is equal to left plus right by 2. Go ahead, left plus by right by 2. I find that this is middle. And if this is middle, I'm saying that now I have got two partitions. Pay attention, I got two partition. First partition is left to mid and second partition is mid plus 1 to right. First partition left to mid and second partition is mid plus 1 to right. Now what I'm saying, go ahead and sort, go ahead and sort these partitions individually. ये जो पार्टीशंस आपके पास है, सॉर्ट दिस पार्टीशन इंडिविजुअली। सर कैसे सॉर्ट करना है वो सस्पेंस है, वो हम लोग बाद में आएंगे। आई एम सेइंग दैट अभी समहाउ यू सॉर्ट दिस बोथ पार्टीशंस individually. A continue further. If you sort the first partition, what is the result? The result would be 1, 2, 3, 5, 5, 6. Okay, that is great. Second partition, you sort it individually. That comes out to be 6, 7, 8 and 9. राइट? तो चलो दोनों पार्टीशन हमने इंडिविजुअली सॉर्ट कर लिए। डोंट वरी, मर्ज सॉर्ट हम लोग थियोरेटिकली नहीं पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली गाइड पढ़ने वाले हैं। हम लोग कोड करने वाले हैं और कोड में आपके सामने टाइप करने वाला हूं। अभी तक जितने सारे हुए मैंने आपको सिर्फ थियरी सुनाई एंड आपको समझ में आया होगा डेटा स्ट्रक्चर की थियरी सुनना ज्यादा हेवी होता है देन प्रैक्टिकल करने से। बिकॉज यू नो थियोरेटिकली यू आर लिसनिंग सो मेनी बिग एल्गोरिथम्स, इट फाइंड दैट सर ये ओवरवेलमिंग है। सो मर्ज सॉर्ट इट इज ओके, बिग है लेकिन इट इज क्वाइट इजी। वी आर गोइंग टू डू इट स्टेप बाय स्टेप ऑन पेपर एंड वी आर गोइंग टू राइट द एल्गोरिथम एज वेल। सो आई रियली डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर प्रॉब्लम आया हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। If we have got like this, chalo things are done. And now the things are done, please pay attention. If things are done, अब मुझको क्या करना है? I'm saying that let us take two indices. Let us take two indices. One, if this is left index, if this is a left index, you continue further. We have got another index. This is let's say right index. एक I और एक J. If one is I, another is J, and let us create one temporary array. Let us create one temporary array. Temporary array. Now what I am saying, listen carefully. अब मुझको क्या करना है? लेफ्ट पार्टीशन का एलिमेंट राइट पार्टीशन के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है और फिर जो भी स्मॉलर होगा, दैट आई नीड टू कॉपी, सो यू फाइंड दैट, यू कॉपी दैट। जिसको कॉपी किया है, लिसन, जिसको कॉपी किया है उसको इंक्रीमेंट करो और टेम्पररी एरे को इंक्रीमेंट करो। यू कंटिन्यू फर्दर। Again you compare the left element with the right element. शायद मैंने एरे इतना अच्छा नहीं लिया है, हम लोग अगले एग्जांपल में अलग वाला एरे लेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग वापस से करेंगे। हाँ, so 2. Now whichever is smaller, you continue further, you copy that element and then जिसको कॉपी किया है उसको इंक्रीमेंट करो और इसको इंक्रीमेंट करो। Again you continue further, you find out that which one is smaller. Again I say that if this element is smaller, जो भी smaller होगा, you copy that element, increment that index, increment your temporary array index, and you repeat the process. Whichever is smaller, you copy that element, you increment this index, you increment next index, and you continue further. And then whichever is smaller, you decide. अब इसको दोनों सेम ही है लकीली, तो कोई भी ले लो। अगर आप लोग ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओगे, डोंट यू थिंक दैट या तो लेफ्ट या तो राइट, कोई ना कोई तो एक पार्टीशन आपका एग्जॉस्ट होने वाला है, या तो लेफ्ट या तो राइट।
जो जो स्मॉलर होगा आप लोग पिकअप करते जाओ, यहां से यहां से यहां से यहां से आप लोग पिकअप करते जाओ, कोई ना कोई तो एक पार्टीशन आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब एक पार्टीशन एग्जॉस्ट हो जाएगा, बचे हुए पार्टीशन के जितने एलिमेंट्स है उतने चुपचाप से अपेंड कर दो। बचे हुए पार्टीशन के सारे एलिमेंट्स चुपचाप से अपेंड कर दो, एंड दैट्स इट। दिस इज नथिंग बट यू कॉल इट एज अ सॉर्टेड एरे इज रेडी। दिस इज व्हाट अ मर्जिंग टेक्निक। मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया, और ये एरे इतना अच्छा नहीं था। आई गेस मैं एक काम करूंगा, मैं एक नया वाला एरे लूंगा, एंड विद न्यू एरे वी विल ट्राई टू डू इट वंस अगेन, वेयर वी विल हैव लिटरली एलिमेंट्स इन मोर रैंडमाइज फैशन। ये मेरे पास कहीं पर तो कॉपी किया हुआ था, मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं। आई एम टेकिंग सम नंबर्स, लेट्स से नंबर्स इज लेट्स से 8, लेट्स से 2, or let's say 3, let's say 9, let's say 1, let's say 5, let's say 7, let's say 2, let's say 6, let's say 4. These are kind of elements that I have arranged. अब ये आई गेस अच्छे से रैंडम नंबर्स है, एंड इफ दीज आर रैंडम नंबर्स, लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ इट गोज। मैं फिर से एक बार प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, एंड डोंट वरी, वी कैन रिपीट इट 1 or 2 more टाइम्स इफ इट इज needed. So what is the step? Again, first focus on a merging technique. जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट के वक्त पहले मैं आपको इंसर्शन पढ़ा रहा था, कि मैंने आपको बोला फर्स्ट फोकस ऑन इंसर्शन। इफ यू अंडरस्टैंड इंसर्शन, लर्निंग इंसर्शन सॉर्ट इज वेरी इजी। On the parallel line, first focus on a merging technique. If you understood merging technique, merge sort is very simple. Merge sort is very simple. तो हम लोग बाद में ही देखते हैं वो कैसे करना है। पहले we will go ahead, whatever array is there, let us divide array into two parts, two almost equal parts. अगर even number होंगे तो 50-50 हो जाएगा, अगर odd number होंगे तो एक में एक ज्यादा होगा एक में एक कम होगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, that is absolutely fine. And continue. So what is the first step? The first step, divide array into the two parts. Then what is second step? Sort the left partition. How? Somehow sort the left partition. If you sort the left partition, can you please tell me, left partition जब sort होगा तो क्या आएगा? In this case, sorted left partition. Sorted left partition, I guess it is 1, 3, 5, 8, 9. 1, 3, 5, 8, 9. Good. अच्छा, sorted right partition. Go ahead, sort the right partition. It is 2, 4, 6, and 7. Up, take 3, create a temporary array. Go ahead, create a temporary array. Temporary array इतना बड़ा होना चाहिए which can accommodate the whole left partition plus right partition, which can accommodate both left partition plus right partition. ऐसा इतना बड़ा array आपका होना चाहिए. Okay, that is good. So I have taken an array. Now take 3 indices. Index I at the beginning of the left partition. Index I at the beginning of the left partition. Index J at the beginning of the right partition. At the beginning of the right partition, and index K at the start of temporary array. Good. You compare ith element and jth element, whichever is smaller. Can you please tell me which one is smaller now? I'm saying that it is the ith element and jth element, और नीचे ये बड़ा k index है. Yes, ith element is smaller. Ith element is smaller. Go ahead, copy this, and then increment increment I index, increment k index. Again you compare ith element and jth element. Which one is smaller? Oh, now in this time jth element is smaller. So you copy jth element, you increment jth element, you increment kth element. Oh, you continue further. Now which one is smaller? Ith element and jth element. Yes, I found that 3 is smaller. A3 is smaller. Let me copy 3. Increment I, increment j. You again continue. Now you find that the smaller element is jth element. Whichever is smaller, you copy that element, element, increment j, increment k. आप लोग नोट कर रहे हो कि हम लोग हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जिसको कॉपी किया है हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं. कंटिन्यू फर्दर. Which one is smaller? Ith element, you increment it. Ith element,
you copy ith element, increment I, and then increment k. Again, you continue further. Which one is smaller? Jth element is smaller. So 6, you copy 6, you increment j, and you increment k. You repeat once again. Which one is smaller? Again, jth element is smaller. So you copy 7, increment j, and increment k. And as I was telling you earlier, या तो राइट पार्टीशन खत्म हो जाएगा या तो लेफ्ट पार्टीशन खत्म हो जाएगा. यू नेवर नो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, बट कोई ना कोई तो एक पार्टीशन खत्म हो जाएगा. When one partition is completed, what is to be done? One partition is completed, what is to be done? Copy the remaining elements of the second partition and append it to the array. Copy remaining element of the second partition and append it to the array. One by one, I, J, just copy paste करो, खत्म हो गया. Now, is your main array sorted? Is your main array sorted? Not really. Your temporary array is sorted. प्लीज नोट दैट आपने पूरा का पूरा डेटा एक टेम्पररी एरे में कॉपी करवा के लिया है, तो टेम्पररी एरे इज सॉर्टेड. ओ, लेकिन सर मुझको मेन एरे सॉर्ट करना है. अरे मेन एरे सॉर्ट करना है तो कौन सा बड़ा तीर मारना है? गो अहेड एंड ओवरराइट टेम्पररी एरे बैक टू द ओरिजिनल एरे. मेक टेम्पररी एरे बैक टू द ओरिजिनल एरे. नहीं, ARR इज इक्वल टू टेम से पॉइंटर कॉपी होता है. हमें पॉइंटर रेफरेंस कॉपी नहीं करना है, हमें एलिमेंट कॉपी करना है. तो एक लूप लगाओ और टेम्पररी एरे ओरिजिनल ARR एरे के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो, वेयर योर होल एरे इज सॉर्टेड. नाउ इज द लॉजिक क्लियर? इज मर्जिंग लॉजिक इज क्लियर? शुड आई रिपीट वंस अगेन? Yes, no problem. I'll repeat once again. No problem. Please pay attention. मैं पूरा लॉजिक फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि हमें उसका कोड लिखना है. प्लीज गो अहेड. I'm just going ahead. And what I'm saying is that, what is your step number one? Step number one, divide array. Step number one. हाँ ठीक है. It is okay. If it is still required, मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं. It will not take much time. हाँ, divide array into two equal partition. Mid is equal to left plus right by 2. You divide into the two equal partitions. We have done that. What is next job to be done? Divide into the two equal partition. What is next job to be done? Apply logic to sort the left partition and then you sort right partition independently. ये दोनों पार्टीशन अलग अलग से सॉर्ट कर लो. पहला पार्टीशन लेफ्ट टू मिड है और दूसरा पार्टीशन मिड प्लस 1 टू राइट है. ये पहला पार्टीशन लेफ्ट टू मिड है और दूसरा पार्टीशन मिड प्लस 1 टू राइट है. ओके गुड. अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज दैट allocate a temporary array. कुछ लोग उसको ऑक्सिलरी एरे भी कहते हैं. allocate a temporary array और you can say auxiliary array. और इसका काम क्या है? इसका काम है which can hold both left partition plus right partition. ए लेफ्ट प्लस राइट दोनों पार्टीशन के टोटल एलिमेंट्स कंपेयर कर आ सकते हैं. इतना बड़ा मतलब क्या होगा? इट विल बी लाइक 8 minus 0 plus 1. Total 9 elements are there. 8 minus 0 plus 1. Total 9 elements are there. So that is something in front of you. If this is clear, let us continue further. Pay attention. Continue further. Take I is equal to left, J is equal to M plus 1. I is equal to left at the beginning of the left partition, J at the beginning of the right partition, correct? And K at the beginning of the temporary array. Obviously it will be K is equal to 0. You start comparing, whichever is smaller. I'm going now a bit faster, pay attention. Whichever is smaller, you copy that. A 1 is smaller, you copy 1, you increment that index, you increment K. Now 2 and 3, you find 2 is smaller, you increment this and you increment this. 3 and 4, you copy 3, and then you increment I, you increment K.
5 and 4. Okay, you copy 4, you increment j, you increment k. 5 and 6, 5 and 6, you copy 5, increment I, increment k. 8 and 6, 8 and 6, go ahead, you copy the smaller element 6, you copy 6, you increment j, increment k. I'm saying that you keep continuing until any one partition is exhausted. So you find that 8 and 7, again 7 is smaller, you take this, you copy j, you increment j, you increment k. I found that in this example, right partition is completed. If right partition is completed, go ahead and copy remaining elements of the left partition. This is done. But has it sorted my main array? No, it has sorted your temporary array. अब ये जो temporary array sort हुआ है, इसको वापस से overwrite कर दो on like original array so that the whole array is sorted. Now is this clear? Sure? Great. Now if it is clear, wait for a minute. If it is clear, now the next question. Next question, but we didn't discuss how you are going to sort the left partition and how you are going to sort the right partition. हमने क्या कहा? You just divide into the two partition, you sort left partition, you sort right partition. लेकिन now question is that how do you sort left partition and how do you sort right partition? So sir उसके लिए bubble sort use करें क्या? So उसके लिए insertion sort use करें क्या? I said no, it is poor idea. Instead of bubble sort and insertion sort, why don't you apply merge sort once again? Yes, absolutely. It is a divide and conquer problem. You can again continue further. Pay attention. You can again continue further and you can try to again divide this portion into the two parts. You can again divide it into the two parts and you can think of sorting it further. I hope you are getting my point. And then, so sir, how do I sort the next one? Again, you divide it into the two more parts and try to sort it together. And you want to try to sort this, again you divide it into the two parts and try to sort this much. I hope you people understand that if array has got a single element, if array has got a single element, then single element is always sorted. I hope आपको ये पता होगा. It is highly philosophical, you know. If there is a single element, then it is always sorted. क्योंकि there is no one to comparison, no. So it is always sorted. And then you start merging. ये जो दो partition थे, अब इन दोनों को merge करो, इनको merge करो. फिर ये जो दो partition बने थे, फिर इनको merge करो. And then again you continue. ये sorted partition इस sorted partition के साथ merge करो. And this way you continue the story and you find that the whole array is sorted. Wait for a minute, मैं बाद में पेपर वर्क के ऊपर जाऊंगा. पहले कोड लिखेंगे, पेपर वर्क के ऊपर जाएंगे. एक छोटा सा पॉइंट मुझको पहले बताना है और बाद में हम लोग कंप्लीट चाहिए तो मैं पूरा पेपर वर्क करके दिखाता हूं. आप चिंता मत करो, पहले ये वाला पार्ट चेक करो. Let us just focus on this part. For time being, I want you people to focus on this part. Which part? Let's say that, just a minute. Let's say that this is my array. Let's say that this is my array. And if this is my array, see it carefully. This is my array. I want you people to focus onto the right partition. I want you people to focus onto the right partition. I want you people to focus on right partition क्योंकि ये जो लास्ट वाला लॉजिक है ना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये जो ओवरराइटिंग का लॉजिक है, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. तो मैं पहले ऑन पेपर ही दिखाना चाहता हूं, बाद में हम लोग कोड में जाएंगे. नाउ टेल मी फॉर दिस पार्टीशन, राइट वाले पार्टीशन के ऊपर फोकस करो. फॉर राइट वाले पार्टीशन के लिए व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट? What is left index, what is right index? For the right partition, I'm talking about this much of part and I'm saying that how this is going to be sorted. Yes, in this particular case, can I say that this is nothing but left, this is nothing but left, and this is nothing but right? You agree with this? Oh, this is left, this is right. So it is 5 and 8. By the way, how do you get its middle? How do you get its middle? इसका मिडल क्या आएगा? एक और फटाफट से, उसका मिडल क्या आएगा?
A 5 plus 8 divided by 2, that comes out to be 6. Agree? So this is middle and this is middle plus 1. So I can simply say that, this is partition something like this. Then you continue further. You try to sort this individually. Please pay attention. You sort this individually. कोई मुझको बताएगा ये sorted कैसे आएगा? 7 2 sorted. 7 2 sorted is nothing but 2 and 7, right? And 6 4 sorted is nothing but 4 and 6. Okay, that is good. And now you need the indices once again. I'm saying that this is left index. I hope you agree. This one is again right index J. In this case, जो टेम्पररी एरे आप लोग बनाने वाले हो, वो टेम्पररी एरे कितना बड़ा रहेगा? Can you please tell me what should be the size of a temporary array in this case? 4. How 4? Tell me the calculation. 4 कहां से आया? नंबर कहां से आया? 4 कैसे आया? 4 कैसे आया? I'm saying that it is 8 minus 5 plus 1. 8 minus 5 plus 1. I hope you are getting that. 8 minus 5 is 3 plus 1 is 4. So total there are 4 elements. So जो temporary array हम लोग बना रहे हैं, I am very sure that temporary array should be of 4 elements. Okay, no problem. So obviously k कहाँ पर point करेगा? Okay, will point to the zero of this. K is pointing to the zero of this. इसके indices 0 1 2 3. Please pay attention. ये चलो follow. अब I and J, which one is smaller? I see 2 is smaller. So let me copy 2 and then increment I, increment K. Good. You continue once again. Which one is smaller? Jth element is smaller. Let me copy 4. You increment J and increment K. Again, continue further. Which one is smaller? Still J is smaller. Why not copy 6, increment J, increment K? What I see, one partition is exhausted. If one partition is exhausted, what is to be done? Append the remaining one. Okay, I appended the remaining one. Is my main array sorted? No, but temporary array is sorted. What is to be done? I need to overwrite temporary array back to the original array. Is that correct? My question is that how do you copy temporary array back to the original array? Can you write a piece of code for me? ये temporary array मुझको ऊपर के array के ऊपर copy paste करना है. तो मुझको copy paste कैसे करना है? एक एक element copy करना पड़ेगा. I know. तो loop कैसे लगेगा? That is my question. Loop कैसे लगेगा? So do you want to copy something like this? Do you want to say something like this? ARR of I or X whatever is equal to temporary of I. Is it how you want to copy? Is it what you want to copy? क्या इसका 0th एलिमेंट आपको इसके 0th एलिमेंट पे कॉपी करना है? क्या इसका 1 एलिमेंट आपको इसके 1 एलिमेंट पे कॉपी करना है? क्या इसका 2 एलिमेंट आपको इसके 2 एलिमेंट के ऊपर कॉपी करना है? बिल्कुल नहीं. हमें कॉपी कहां पर करना है? प्लीज अंडरस्टैंड दैट. वापिस से कोड में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी बता रहा हूं. अंडरस्टैंड दैट इसको कॉपी आपको इस लेफ्ट के आगे करना है. मिड प्लस 1 को या फिर इस लेफ्ट के आगे आपको कॉपी करना है. यू एग्री विद दिस? You want to copy it from left onwards. For the inner partition it is left, no? For the inner partition it is left. So I'm saying that इसका जो 0 होगा, please pay attention, इसका जो 0 होगा that will go on a left. इसका जो 1 होगा that will go on a left plus 1. इसका जो 2 होगा that will go on a left plus 2. इसका जो 3 होगा it will go on a left plus 3. You agree with this? इसका जो 0 होगा it will go on a left,
इसका जो फर्स्ट होगा इट विल गो लेफ्ट प्लस 1, इसका जो 2 होगा इट विल बी लेफ्ट प्लस 2 एंड इट विल लेफ्ट प्लस 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. इन जनरल व्हाट आई वांट टू से इज दैट जो लास्ट वाला लूप हम लोग लिखेंगे, द लूप आई नीड टू बी केयरफुल, आई नीड टू राइट इट लेफ्ट प्लस आई. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये लास्ट के कॉपी के लूप में बहुत सारे लोगों की वाट लग जाती है. तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि कॉपी करना है मतलब कैसे कॉपी करना है. एंड इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, ट्रस्ट मी, रेस्ट ऑफ द कोड इज वेरी इजी, सुपर इजी कोड, सुपर इजी कोड. लेट अस जस्ट गो अहेड एंड लेट अस थिंक ऑफ इंप्लीमेंटिंग इट. क्या आज पूरा लेक्चर खत्म होने को आया, हम लोगों ने अभी तक इक्लिप्स के एक प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया. कोई बात नहीं, हम लोग इसको बनाते हैं और इसको इंप्लीमेंट करेंगे. आई एम गोइंग अहेड. क्या नाम है इसका? सॉर्टिंग, लेट्स से मर्ज सॉर्ट. वैसे भी आज क्या क्विक सॉर्ट हो नहीं पाएगा, तो मर्ज सॉर्ट उतना ही खत्म करेंगे. डन. Yes, I got a merge sort, new class merge sort main. Okay, add some package. Done, finish. And don't worry, पहले हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे और बाद में कोड में कन्वर्ट करेंगे. So don't worry about it. We will follow the same technique for the whole module. जहां जहां हम लोग कोड लिखेंगे हम लोग वैसे ही लिखेंगे. और जब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तब लेट मी नो अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो. कम से कम इंग्लिश तक तो सबको समझ में आना चाहिए. Should not be a problem. Here I am main and I want to write public static void, static void merge sort. Please keep your eclipse ready. बाद में आपको इसको रन करके देखना है. I want to pass the array. I want to pass the array and I want to pass the left. I want to pass the right. Okay, I'm ready with this. I'm ready with this. So logic क्या क्या लगाना है? What is the first step? Can you please tell me? अरे बोलो फटाफट, आप लोग बोलो, हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में तो पहले लिखते हैं. यस, divide array in two equal partitions. Equal कहो या almost equal कहो, equal partitions. Okay, that is the first step. What is second step? What is second step? अरे आई और जे नहीं, रुको रुको, पहले उनको सॉर्ट करो ना. सॉर्ट लेफ्ट पार्टीशन. अरे पहले इंडिविजुअल तो सॉर्ट करो, डायरेक्टली आई जे के ऊपर पहुंच गए लोग. सॉर्ट लेफ्ट पार्टीशन एंड देन सॉर्ट राइट पार्टीशन. सो लेफ्ट और राइट पार्टीशन हमको इंडिविजुअली सॉर्ट करना है. ओके, दैट इज गुड. बाय द वे, आपका लेफ्ट पार्टीशन कहां से कहां तक है? लेफ्ट पार्टीशन आपका कहां से कहां तक है? लेफ्ट पार्टीशन इज लेफ्ट टू मिड. Am I correct? And right partition is mid plus 1 to right. A right partition is mid plus 1 to right. Okay, I got that. Next. अब हमें क्या करना है? At high level, yes, create temporary array. Don't forget, temporary array to accommodate both partitions. So हमें इतना बड़ा array बनाना है जो दोनों partitions को accommodate कर सके. Okay, I got that as well. What is the next step? Next step, at the higher level, merge two sorted partitions into temporary array. अब यहां पर हम लोग वो i j k वगैरह indexes वगैरह लेंगे and we will do that. Don't worry about it. And what is the final step? What is the final step? Overwrite temporary array back to main array, back to original array at appropriate position. Is overall logic is clear to everyone? हम लोगों ने यही पढ़ा था और हम लोग यही फॉलो करेंगे. ऑब्वियसली आईजे के इंडेक्स वो अभी मैं नहीं लिखने वाला हूं, सो दैट यू कैन ऑलवेज डू इट. एकोमोडेट का स्पेलिंग एनीवे. हाँ, यहां पर हमें क्या करना है? हाँ, टू एकोमोडेट क्रिएट सॉरी मर्जिंग के लिए आपको शायद ऐसे लॉजिक लगाना है. व्हाट इज दैट? ए मर्जिंग के अंदर का मैं लॉजिक बता रहा हूं. व्हाट इज दैट? कंपेयर एलिमेंट्स
from both partitions and copy the smaller one until any one partition is done and completed. And then next if one partition is completed, then copy remaining elements from other partition. I hope now this is very clear कि ये सब कुछ हमको करना है. Let us go ahead and start writing code step by step, line by line. तो चलो पहला step, integer mid is equal to left plus right by 2. जहां पर समझ में नहीं आएगा वहां पर पूछना. It is equal to mid is equal to left plus right by 2. Is done. You continue further. Sort the left partition. Oh, this is very easy job now because we are using recursion. ARR left to mid, a left to mid, and you continue further. You follow the similar one, mid plus 1 to right. Is this correct? These are the recursive calls. So apply to the left partition, apply to the right partition. Or you continue further. Create the temporary array to accommodate both the partitions. Okay, so let me allocate a temporary array. Temp is equal to new int or mathematics right minus left plus 1. So temporary array to accommodate both the partitions. We have done that as well. अब रुको, अब लॉजिक लगाना है. Compare two elements from both the partitions and what is that? Copy the smaller one. अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी integer I is equal to left, j is equal to mid plus 1 and k is equal to 0. I hope this is clear. I is equal to left, j is equal to mid plus 1 and k is equal to 0. What do you want to do? You want to follow it in a loop. आपको compare करना है. If ARR of I is less than ARR of j, ARR of I is less than ARR of j, क्या करना है? अरे किसको कॉपी करना है? I can simply say temp of k is equal to ARR of I. A temp of k is equal to ARR of I. And then you want to increment k, then you want to increment I. अगर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखने का शौक है तो अगले लाइन के ऊपर k प्लस प्लस, अगले लाइन के ऊपर i प्लस प्लस लिखो. आई एम जस्ट राइटिंग इन मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स. आई रिपीट वंस अगेन, जिसको ये समझ में नहीं आएगा आप लोग सीधा लिखो टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरर ऑफ i, नीचे के लाइन के ऊपर k प्लस प्लस, उसके नीचे के लाइन के ऊपर i प्लस प्लस. else what to do? Yes, it is post increment operation that we are doing. Hey, what is else what to do? Else temporary of k is equal to ARR of j. और फिर जिसको कॉपी किया है ए j को इंक्रीमेंट करो और k को इंक्रीमेंट करो. ओके, वी हैव डन दैट. दिस इज आल्सो डन. बाय द वे, लेकिन ये आपको कब तक करना है? until any one partition is done. Okay, रुको. So I want to find out until any one partition is done. So what I'm saying, have a look at this. While ये मेरा लेफ्ट पार्टीशन कहां से कहां तक है? लेफ्ट पार्टीशन कहां से कहां तक था? लेफ्ट टू मिड. सो I is less than or equal to mid and j is less than or equal to ये मिड प्लस 1 से कहां तक था? Yes, it was till right. So j is less than or equal to right. Oh, that is fantastic. अब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इट विल कम आउट. ये मुझको पता नहीं कौन सा फॉल्स होने वाला है. दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इट विल कम आउट. let us assume that the right partition is finished. If right partition is finished, what I need to do? Append the left partition. Oh yes, append the left partition. See my code. Append the left partition while I is less than mid. Just say temp of k is equal to ARR of I.
ये बचे हुए सारे एलिमेंट ith पार्टीशन के लेफ्ट पार्टीशन की कॉपी कर दो. Okay, that is good. But what if this condition is false? What if this condition is false? If this condition is false, what is to be done? If this condition is false, what is to be done? You go ahead and you follow the right one. Okay, while j is less than or equal to right, temp of k is equal to AR of k, AR of j, right? So you need to take a call. अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, प्लीज पे अटेंशन, ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा? इट विल कॉपी द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस, इट विल कॉपी द एलिमेंट फ्रॉम दिस. ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स है तो इस लूप के अंदर वैसे भी नहीं जाएगा. अदर वे राउंड, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब मेरा लेफ्ट पार्टीशन खत्म हो गया. अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, पे अटेंशन, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो वैसे भी वो पहले लूप में नहीं जाने वाला है. दिस कंडीशन इज फॉल्स एंड इट विल कॉपी द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द अदर पार्टीशन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट. ये मर्जिंग का लॉजिक हो गया, लेकिन ये मर्जिंग का लॉजिक कहां पर हुआ है? टेम्पररी एरे में हुआ है. व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन? टेम्पररी एरे में हुआ है. व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन? I want to copy this particular data back to the original. Oh, or back to the original. Continue further. I is equal to 0. I is less than temp dot length I plus plus. And how do I copy? How do I copy? Should I copy like this? Should I copy like this? No, 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 no. What we need to do extra? I guess ARR of left plus I is equal to temp of I. Done. So code is completed. Almost. Almost क्यों कह रहे हैं? Almost इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने प्रोसेस वी हैव एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ. व्हाट इज लेफ्ट? वी हैव एक्सप्लेन्ड प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ. व्हाट इज लेफ्ट? हम लोग रिकर्शन कर रहे हैं. ओ ओ ओ, रिकर्शन मतलब बेस कंडीशन तो रह ही गया. ओ, यू थिंक ऑफ अ बेस कंडीशन. व्हाट इज बेस कंडीशन? इफ पार्टीशन is invalid, if partition is invalid or have single element or have single element then return. Correct? No, अगर एक ही एलिमेंट है तो सीधा सीधा रिटर्न होना है. What I'm saying is that a partition is invalid का मतलब क्या है? Partition is invalid का मतलब है your left is greater than right. A left has to be always less than right. If left is greater than right, it is invalid partition. और if left is equal to right, a left is equal to right का मतलब क्या है? Left is equal to right. Left is equal to right का मतलब क्या है? Oh, there is a single element. If there is a single element, then just say return, nothing much to be done, like a terminating condition. That's it. अब ऐसे इतना गंदा लिखने की जरूरत नहीं है. You could have make it more readable. You can make it more readable by simply saying left is greater than or equal to right. I hope you got the point. सर ये कोड काम करता है? It should. Why not? You test it. You go ahead, you declare the array, and I'll take up the same array. Let's say 8, 3, 9, 1, 5, 7, 2, 6, 4. Yes, I have got the array. And you continue further. What is next job to be done? Next job to be done. Let us just print it first. Arrays dot toString. You pass the array. This is before sorting. I'm printing the array. After sorting, I'm printing the array. Just tell me what should be the call to the merge sort. I'm passing ARR. What should be left? What should be right? Left is 0 and right is ARR last element, no? Last element length minus 1. ARR length minus 1. That's it. So is this array sorted? Right click, run as Java application.
Is this sorted? Yeah. Quickly copy paste and execute it. Then we will do the paperwork once again. Quickly copy paste and execute it. 42, 43, no problem. Please let me know. लाइन नंबर 42, 43. मेरे को लगा था लोग यहीं पर कंफ्यूज होते. Override part, no problem. I am repeating. Don't worry. Why temp dot length? Okay, that is a question. Coming back to the point, and that is the reason I drawn this diagram. मेरे को पता था ये question आने वाला है. See, what I said is that I never know कि left और right हमेशा 0 और length minus 1 नहीं होने वाले. जो आपका पहला कॉल है वहां पर लेफ्ट विल बी 0, वहां पर राइट विल बी n minus 1. लेकिन जो आपके रिकर्सिव कॉल होंगे, रिकर्सिव कॉल में आपके लेफ्ट और राइट चेंज होते रहेंगे. आई होप यू एग्री. लेफ्ट और राइट चेंज होते रहेंगे. सो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल कि पहला मेरा जो सेकंड रिकर्सिव कॉल होगा, इट इज डन फॉर दिस पार्ट. फॉर दिस पार्ट, this is going to be the middle element. So my array is divided into the two parts, left and right. Left part is sorted individually, right part is sorted individually. This is done. If this part is sorted individually, this part is sorted individually. अब ये जो हम लोग लिया है, ये हम लोग ने कहां पर लिया है? टेम्पररी एरे में. व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेम्पररी एरे? टेम्पररी एरे का लेंथ कितना होना चाहिए? जितना दोनों पार्टीशन को एकोमोडेट कर सके इतना होना चाहिए. ये दोनों पार्टीशन को एकोमोडेट कर सके उतना लेंथ कितना आएगा? इट इज 8 माइनस 5 प्लस 1. 8 माइनस 5 मतलब मेरे पास 4 एलिमेंट्स है. 8 माइनस 5 प्लस 1, सो मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स है. ऑब्वियसली द टेम्पररी एरे हैज गॉट 4 एलिमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज समवन हैज आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई टेम्प डॉट लेंथ. जब मैं यहां से यहां पर राइट करूंगा मुझको कितने एलिमेंट राइट करने? जब मैं यहां से यहां पर एलिमेंट राइट करूंगा मुझको कितने एलिमेंट राइट करने? हाउ मेनी एलिमेंट्स टू ओवरराइट? ओ आई नीड टू ओवरराइट ओनली 4 एलिमेंट्स. मुझको पूरा का पूरा एरे ओवरराइट नहीं करना है. जो करंट पार्टीशन था उसके अंदर जितने एलिमेंट थे उतने ही एलिमेंट मेरे एरे के अंदर है, और जितने एलिमेंट एरे के अंदर है उतने ही एलिमेंट्स मुझको ओवरराइट करने हैं. ये उतने ही एलिमेंट मुझको ओवरराइट करने हैं. एंड दैट इज द रीजन जो लूप लिखा गया है, लूप इज रिटन समथिंग लाइक दिस. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो आपका टेम्पररी एरे है, टेम्पररी एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. जिसने पूछा था व्हाई टेम डॉट लेंथ, जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट ओवरराइट करने. इज दैट पार्ट इज क्लियर? ओके, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. अब राइट कैसे करना है? ये क्या राइट करना है? इसका 0th एलिमेंट इसके 0th एलिमेंट के ऊपर राइट करना है. इसका 0th एलिमेंट इसके 0th एलिमेंट के ऊपर राइट करना है. इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट पे राइट करना है. इसका सेकंड इसके सेकंड के ऊपर राइट करना है. ऐसा करना है क्या? नो, नॉट एट ऑल. मुझको ऐसे राइट नहीं करना है. मुझको कैसे राइट करना है? ये जो लेफ्ट था इसका 0 इसके लेफ्ट पे राइट करना है. इसका 1 इसके लेफ्ट प्लस 1 पे राइट करना है. इसका 2 इसके लेफ्ट प्लस 2 पे राइट करना है. एंड देन इसका 3 इसके इसके 3 प्लस इसके ऊपर राइट करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. And if you understand that, and if you also understand that, now it is very simple. All we need to follow, is a loop. जो left है, a left plus 0, left plus 1, left plus 2, left plus 3. In general, it is left plus I. And then ith element, I'm putting left plus I. Is that clear now? Everyone? Good. Now जयदीप वाज हैविंग वन क्वेश्चन. तो हमें एरे का भी लेंथ यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा. एंड दैट इज द रीजन जो हमने पहले पास किया है, हमने ARR डॉट लेंथ प्लस 1 ही यूज किया है. जो हमने पहले पास किया है वो ARR डॉट लेंथ प्लस 1 ही पास किया है. प्लीज विजुअलाइज दैट. राइट? सो दैट इज देयर. आई होप कोड इज वर्किंग फॉर यू. कैन यू प्लीज चेक क्विकली? If it is working for you, let me quickly do the paperwork for last time. Last time, and then we will wind up. लेक्चर खत्म हो चुका है. मैं सिर्फ इसको एक बार और पेपर वर्क कर रहा हूं, और मैं उसके सारे स्टेप्स एक बार कर रहा हूं. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स. चलो, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स.
Suppose that this is the array. एंड नाउ प्लीज पे अटेंशन, जिन लोगों को क्या कहते हैं सर मुझको हर एक स्टेप में इंटरेस्ट है, सर रिकर्सिव कॉल इंटरनली कैसे होता है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, टू बी फ्रैंक इन माय ओपिनियन ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये सिर्फ मैं आपके साइकोलॉजी के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रिकर्शन कैसे पढ़ना चाहिए, पहला पास टर्मिनेटिंग कंडीशन यू अंडरस्टूड, आइडियली रिकर्शन का पढ़ाई वहां पर खत्म करना चाहिए, बट स्टिल नहीं, आप लोगों को इंटरेस्ट है, विल कंटिन्यू फर्दर। स्टेप नंबर 1, योगेश को क्या हो गया, temp is equal to right minus left plus 1, please repeat, okay, have a look at this, yogesh in this case temporary array में कितने एलिमेंट होने चाहिए, योगेश इन दिस केस मैं इस राइट वाले पार्टीशन की सिर्फ बात कर रहा हूं, यहां पर टेम्पररी एरे में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स, और ये 4 एलिमेंट कैसे काउंट किया आपने, how do you count the 4 element, it is 8 minus 5 plus 1, so partition का last number, partition का first number index and that plus 1, ये जहां तक मुझको याद है, लिसन केयरफुली, ये एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है, एप्टीट्यूड पे पढ़ाया जाता है मतलब आपके लेवल पे नहीं, आप इंजीनियर्स हो, M1 M2 M3 वाले, मुझको याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, हम लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप का एक एग्जाम हुआ करता था, और उस स्कॉलरशिप के एग्जाम में वो एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आते थे, और क्वेश्चन कुछ ऐसे होते थे, रोल नंबर 11 टू रोल नंबर 20 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, in a sequence all roll numbers are there, roll number 11 to roll number 20 how many students are there, how do you calculate it, roll number 11 to roll number 20 total कितने students है, कैसे count करते हो, I simply count it 20 minus 11 plus 1, that comes out to be 10, I hope you got the point, so जब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं तो वी से दैट हायर नंबर माइनस लोअर नंबर प्लस 1, that gives me all the element inclusive both the ends, Yogesh you got the point, कहां पर गया योगेश, खो गया, I said that this is something that I learned in a 4th standard कि ऐसे you know this is aptitude problem कि like 11 स्कूल के बच्चों का aptitude problem, वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, हमारे पास राइट इंडेक्स है, हमारे पास लेफ्ट इंडेक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, सो इंक्लूसिव बोथ एंड्स आई हैव गॉट टोटल 4 एलिमेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, एनीवे I hope you got that. And that is the reason we have allocated the array, temporary array of the 4 elements. And then I'm continuing further. हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? Let us do the whole story once again. Doing the whole story once again, you find that let us divide the array. Let us divide the array. This is the left partition, and for this is the right partition. So my first recursive call goes something like this. The first recursive call where left is equal to mid, a left is equal to 0 and mid is equal to 4, and then mid plus 1 is equal to 5 to right is equal to 8. So that is the first recursive call. लेकिन रुको, अब यहां पर ये कैसे सॉर्ट होने वाला है, अच्छा chat is not responding, no problem योगेश, let us continue further. यू कंटिन्यू फर्दर, अब इसका लेकिन लेफ्ट को कैसे सॉर्ट करोगे, लेफ्ट को सॉर्ट करने के लिए वापिस से एक बार लेफ्ट को सॉर्ट करने के लिए उसके अंदर वापिस से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज ओवर हेयर, दिस इज ओवर हेयर, सो इट विल बी अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ओके दैट इज स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट अबाउट द राइट साइड, राइट साइड में भी वैसे होगा, राइट साइड भी डायरेक्टली सॉर्ट नहीं होने वाला है, इट विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ओके नो इश्यूज, यू कंटिन्यू फर्दर, यू कंटिन्यू फर्दर, अब उसके नीचे, अब इसका जो 839 ये वाला जो पार्टीशन है, दैट पार्टीशन विल बी अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दिस पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, 15 वाला पार्टीशन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 72 वाला पार्टीशन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, 64 वाला पार्टीशन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ओके यू कंटिन्यू फर्दर, ये जो 83 वाला पार्टीशन है इसके लिए अभी भी प्रॉब्लम है, इट हैज टू बी अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, चलो फाइनली वी रीच टू द पोजीशन
यहां पर 8 है, यहां पर 3 है, 8 और 3, let us merge them together, let us merge them together, let us take a temporary array, and a temporary array जब आप इसको merge करोगे, यहां से पहले 3 कॉपी करो और फिर बचे हुए एलिमेंट कॉपी करो, and now it is 3 and 8. Now this 3 and 8, this is sorted, you go back, you overwrite on these two elements. I hope you are getting my point. So आपके पहले दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए. You continue further. Now you go to the outer call. Outer call, you got 3 8. Outer call you got 3 8, and then you have got 3 8 3 8 and 9. आउटर कॉल यू गॉट 3 8 एंड 9. ये इसका 9 के अंदर तो वैसे एक ही एलिमेंट है, यहां पर कुछ होने वाला नहीं है. यू अगेन कंटिन्यू फर्दर, अगेन यू कंटिन्यू फर्दर. व्हाट यू वांट टू डू? अब वापस से फॉलो द प्रोसेस ना, जो भी स्मॉलर है उसको कॉपी करना है. ए स्मॉलर मैंने कॉपी किया, वापस एक बार दूसरा जो स्मॉलर है उसको भी कॉपी किया टेम्पररी एरे में, दैट इज गुड. और फिर बचे हुए एलिमेंट इसके कॉपी कर लिए. सो टेम्पररी एरे इज नाउ माय सॉर्टेड एरे, एंड नाउ दिस सॉर्टेड एरे of 3 elements, it is overwritten back to the original, back to the original. That is good. You continue further, you continue further, and you follow the rest of the part. rest of the part, यहां से 1 और 5 ले लो, यहां से 1 और 5 ले लो. here you find that ये जो 1 है, ये 1 and 5 इसको सॉर्ट करके वापस से 1 और 5 ही आने वाला है. इसको 1 और 5 को सॉर्ट करके वापस से 1 और 5 ही आने वाला है. ओके, दैट इज गुड. And if it is good, take a look at this. This is what we have got. And again, now let us merge them together once again. As you merge them together once again, ये जो smaller है उसको copy करो, then जो smaller है उसको copy करो, then जो smaller है उसको copy करो. I guess right partition is exhausted. Copy the element from the left partition, 8 and 9. And now you find that, have a look at this. At this moment, I can say that my left partition, at this moment, I can say that my left partition is sorted. My left partition is sorted. ये हम लोगों ने टेम्पररी में सॉर्ट करके इसको वापस से उसकी जगह पे डाल दिया. एंड आई एम सेइंग दैट नाउ द होल दिस पर्टिकुलर एरे इज लाइक सॉर्टेड. लेफ्ट पार्टीशन सॉर्ट हो गया. व्हाट अबाउट राइट पार्टीशन? कंटिन्यू ऑन राइट पार्टीशन. एट द राइट पार्टीशन you take it 7. Please pay attention. You take it 7 individual. You take 2 individual. You create a temporary array. You create a temporary array. जो छोटा है उसको कॉपी करो, जो बड़ा है उसके बाद में आएगा. If this part is sorted, if this part is sorted, copy this much of part. You follow the same story once again. If we have got 6, we have got 4. Again, वापिस से create a temporary array, create one more temporary array. Into the one temporary array, जो छोटा है उसको कॉपी करो, जो छोटा है उसको कॉपी करो. Copy the rest of the element. So you get this. You overwrite onto this. That is still fine. And then you continue further. You continue further. अब वापिस से एक बार ये टेम्पररी ये एक सॉर्टेड है, and this part is also sorted. Again you continue further. You create a temporary array of the 4. You create a temporary array of the 4, and you continued with this. Copy the smaller one. Copy the smaller one. Or 2 is copied. Then 4 is copied. Then 6 is copied. Copy the remaining elements. So ultimately, this part is overwritten back to the original. Finally, we reach to the last iteration. Last iteration in the sense, the first iteration जो अंदर था, मेरे को ये जो लेफ्ट पार्टीशन था, I got the left partition in a sorted. इसका लेफ्ट पार्टीशन अब मुझको सॉर्टेड मिला है, इसका राइट पार्टीशन मुझको सॉर्टेड मिला है, और इसका पेपर वर्क हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. आई होप यू रिकॉल दैट पार्ट. सो यू टेक अ टाइम, यू कॉपी द 1 2 3 4 5, then you continue 6 7. Left partition is completed. You copy 8 and 9, and this whole temporary array is sorted, which you can go back and overwrite onto the main array once again. And that's it. This is nothing but the whole merge sort. अगर आपको लाइन बाय लाइन जाना है सर, अंदर ऐसे होता है, मुझको पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बट दैट इज रीजन आई एम सेइंग दैट रिकर्शन ऐसा कभी नहीं पढ़ा जाता. बट स्टिल इफ यू राइट और वांट, नहीं सर एक बार लाइन बाय लाइन करके दिखाओ, इसलिए मैंने करके दिखाया. So if someone is trying later, you can get it from here. You can go back,
recall the video if you need it once again, right? I hope merge sort is clear to everyone. Done? That is great. If it is great, I guess we should stop over here. If you have got any doubts, you can wait. If you do not have any doubts, you can leave. Bye bye. We will meet Monday. We'll quickly finish quick sort, and then Monday, Tuesday, we'll focus only onto the graph implementation. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मर्ज सॉर्ट का क्विक सॉर्ट का सिमिलर ही है, सो वी कैन टॉक एट दैट टाइम, राइट?